Mahima Creations proudly presents Premier Evening Drive Time Show. Bam bam! Yes, you heard it right. Bam bam! Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Let's beat the traffic. Bam bam! Bye bye. नमस्कार Namaste. నమస్కార Vanakkam. ఖుష్ ఆమదీద్ Assalamualaikum. సత్ శ్రీ అకాల్ మీకు అందరికి వందనము. జై స్వామినారాయణ जय श्री कृष्ण. जय जनेन्द्र हमारे स्माल बंदूक बोलते क्या अलिमतन. मोराली मदद बोलते सारे फीजी मतलब बोलेगा ईसा मुला बंजान हम आ गए हैं आपके प्यारे महिमा के द्वारा मैं से मुबारक. And of course, myself, Valtu Rani. लेकर आपके लिए कौन drive time show that's going to make it totally exciting and totally मस्तानी बंदूचारी. That's right बंजान and of course आपका बोलने की आज का शो फाल्तनी इस फेवरेट टॉपिक रहेगा. फाल्तनी शुरू हो जा. बंदूचार कितने दिन हो गए मैं तो इतनी खुश हूँ. हेलो एक्सक्यूज मी हेलो एक मिनट कितने दिन हो गए नहीं इट्स ब्रॉट बैक टू अर्ली बट फाइन व्हाटएवर. It's not brought back too early. It's every other time of the week we keep doing this stuff. What? No, what every other day of the week? But it's okay. This much of it is required also, Fathari. Bandujan, today is the day to get in the mood of romance. When in the Rome, do the romance. The romance is what she said. But Bandujan, आज तयामा Thursday. हाँ. लेकिन फाल्तनी ये बताओ कि आज क्यों आपने तयामा चूज किया? मैंने एक्चुअली आलतू बाबा मैंने नहीं चूज किया इसको. ये तो आपने चूज किया. वाह. हाँ, मैंने ऑप्शन दिया. Do you want to do this or do you want to do that? He said, okay, we'll do this. So I said, this is Teyamo. देखा That उसने was something else. this और that में क्या फर्क है नहीं बताया उसने. this और that में this बोला बस उतना ही. हाँ. और इसका this का मतलब था वो. Anyway, fine फाल्तनी we'll not diss it. Let's go on and do this. Okay. तो fine तयामो. Yes. Teyamo. So all romantic songs today. Bandujan, you have to call us and you're going to tell us what is the totally romantic song that you would like to listen to today. Hey, And wait. Somebody actually said no romantic song. Somebody said sad face romantic what? song. Yeah. Who did sad face? What is wrong with you? Oh, yes. किसने sad face लगाया? किसी ने नहीं लगाया. कुछ भी बोलेगा. Hey, but I'll tell you one thing. Hey. When you said romantic song, there are two different kinds of romantic songs, right? Altu Baba. Huh. Are you going to play two romantic Item songs are not romantic songs. Item songs are not romantic songs. Let me be very are you clear. going to play truly romantic songs? Yeah, very romantic songs. When you say romantic, it has to be romantic. If it's not romantic, I'll pick up a big stinker about this thing. सजदे में यूं ही झुकता हूँ तुमसे ही तुम पे ही आके रुकता हूँ क्या ये सच होता है. सबको होता है. हाँ, क्या ये सबको होता है. हमको क्या लेना. That's a romantic song. Like songs like that, Altu Baba. Really romantic songs. I don't understand. Let's ask do one thing, Falguni. So if you're talking about this kind of thing, right? If you say this is this is a romantic song, Huh. I want to ask you. I want to ask people what is it? What is their reference of romance? हाँ. What is their reference of romance? हमको क्या लेना सबसे? हाँ. तुमसे ही something सबसे whatever. हाँ. What is that? Is that romance? कि बन गए हो तुम मेरे खुदा. Yeah, it is a very romantic song, ना. So you're saying that submission खुदा is. जाने की मैं फिदा हूँ. So you're saying that romance is somebody submitting to somebody else. Total submission. Not necessarily. Hello, excuse me. Just now said that. Okay. Patajan, I'm sorry. I'm taking a scholastic approach to this. I'm asking people if they चलो can tell ठीक me what है. love is. For me it was very simple. What is यार. love? Baby, don't tell me. Come on, tell me. Come on. Patajan, what is love? The question is that. What is love? आपको कॉल करना है और हमारे साथ यहाँ पे शामिल हो जाना है बंदुजान 408912247 पे. एंड आपको ये बताना है कि आशीष द्विवेदी साहब is saying it's raining in Ahmedabad and other places in Gujarat and he's logged in all the way from Gujarat and he's raining बोले तो कितना रोमांटिक रहेगा आशीष साहब. वाह. हाँ, very nice. हाँ, वाह. So आशीष awesome. साहब, वाह. वो उसका मतलब क्या है? वाह मतलब वाह. Very good. हाँ. हाँ. हाँ, तो तेरे हिसाब से रोमांस क्या है अल्तु बाबा? अरे मेरे हाउ विल आई नो डूड जिसको हुआ नहीं तो कैसे मालूम होगा उसको. मैं तो पूछा ताकि मैं सीखूं कुछ. राइट. अरे नहीं यार, लोग कहते हैं ना कितना रोमांटिक फील आ रहा है. हाँ. वो रोमांटिक फील कैसे आता है? ये जरूरी नहीं है किसी को किसी के साथ कोई चक्कर चलाना हो. और दिल से व्हाट अ रोमांटिक पोम,
What a romantic song. ऐसे तेरे को नहीं लगता है? Faltwani, Huh. I'm still not able to get it. Nice song, good song, feel good songs I can understand. Huh. And this kind of songs actually describing somebody totally somebody else. Is that romance, Faltwani? I don't know, Alta Baba. Somebody got total submission of somebody else. Total submission of somebody else? No, sometimes that is also wrong. Over submission is like you never Okay, know. now you're totally confusing me right now. Balajan, here's what we'll do. As per what she's saying today, direction of all songs going to be Faltwani songs. It'll be nice for sure, Balajan, because I know I've trained her very well, so you'll have some nice songs for sure. क्या बोला? What? सब फालतू I वाली said song. that- You have trained me. No, I said you're going to be. They like the songs what I told Faltwani. Huh. Arey, what is that? Giving a positive thing about that all you want to take from me. What is this? My Okay, goodness. man. Okay, man. Anyway, Balajan, आज हम पूछने वाले हैं what is love? Huh. Bandhu, tell me. Bandhu, tell me. What is love? Love क्या है? What is romance? 408-912-247. नमस्कार, आपका हाथ से पैम पैम कहते हैं हम Thursday में who's this? Hello. Hello. Tan ओहो, कैसे हैं आप? बस बढ़िया. आप लोग कैसे हो? Very अरे good, श्रीनिधि रोमांस जी. के बारे में बात किया तो श्रीनिधि वाह वेरी गुड. वाह, एकदम रंगीन बंदा आ गया है. It's like saying when you talk about something हाँ, romantic. आपने नहीं, it's like- समा भी ऐसा है और माहौल भी आपने तो शुरू कर ही दिया है, तो और क्या करें, सोने पे सुहागा हो गया. Hey, wait, सोने पे सुहागा मतलब क्या था? मतलब समा रंगीन है हाँ. और सुहाग ये देख. हाँ. माहौल भी आप लोगों ने आहा. ऐसा बनाया है कि ते आमों का तो बनता है ना लव सॉन्ग. No. Actually, speaking, I really like it. You know, when you talk about movies, when we talk about romance, right? Huh. First name comes to Yeah. mind is Ranjit. Huh? No? What? Arey, Who? he's Who? What? He's in love with every girl. Ranjit? Huh? He's in love with every girl, right? He's not in love with. He's got that's havas. That Hey. is not pyar. Yuck. Oh my God. Oh God. How- Yuck. Hey, he was able अब तो to. बाबा क्या हो गया? नहीं, इतना नहीं. अच्छा I'm asking- इतना अच्छा थीम है और Hey, let me ask you. I'm trying to get the answer for what romance. She's not able to tell you what romance is. I told Wait, you. what let me romance. finish. Let him tell. All, why I said Ranjit also, he expects all the ladies to submit to him. Yuck. Yeah. I agree to disagree. It's submission. Okay. Go ahead. It's definitely not submission. I would say it's a mutual. It's a cordial relationship or a feeling of oneness or Ah. being together or I like what do the you way. say? Happiness. I like the way you said that feeling of oneness. Yep. Yeah. So does it have to be romantic? When you say romantic, I'm talking about how Faltoni refers romance as amorous romance, It's, not love. Well, yeah. I'm sorry. What was it? I missed the first part. No, I meant to say, like, you know, when you say oneness, right? Oneness can also Yeah. be regular love. Love also can be oneness. I can love you and say I'm feeling one with you, right? No, you can't. Yeah, totally. Yeah, But yeah. Faltoni is not talking that way. Faltoni is saying Te amo is in terms of amorous love, right, Faltoni? yeah, of Not course. friendly love, no like brotherly love. Te amo. That's for not brotherly love. Huh. Who will say that to a brother? Oh, Yuck. Yeah, I mean that. Hello? Yeah, look, that feeling is totally different. I mean, love can be between any two or more people, but that kind of te amo love is definitely between two people who really love each other and they want to be together for maybe the entire life. Uh-huh. Depends. So that's te amo. Of course, yeah. I mean, as a friend, you have a different kind of love. As a brother, as a sister, as a son and daughter. Huh. So yeah, it all depends, Huh. right? Huh. But this te amo specifically is that kind of love that you share between two people who would want to be together for eternal. Ah, Hmm. that is true. Actually, that is So true. That's the somebody kind of love. being eternal, huh? No, man. So So with that eternal love, it's like, I mean, it's long lasting, right? You don't want to see the end of that. So Oh, very so nice. you're saying that there are people. Okay, I'm sure you're one of those, right? Yeah. Huh. Right.
Hey, don't say doubtful at all. Just say yes. Acha. Hey, just say yes. You're one of them, Of right? course. Yeah, good. Yeah. So you know what love is then. Yes, I do. So Meenakshi ji is saying on Facebook, a November 2nd born mentioned it seems, प्यार दोस्ती है, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे प्यार कर ही नहीं सकता, तो प्यार दोस्ती है. क्या घटिया डायलॉग है. Sheesh. Oh my God. Yeah, I think it's Shah Rukh Khan in that movie, right? Kuch Yeah, totally. Look, that's a movie, that's a storyline, and that is how they, that is how the director wanted to. Who? Karan Johar or Yash? Yeah, must be I don't know. Karan Must be Johar Karan Johar who only. has- He only writes all that. He is the only one who has Exactly. misguided. So he wanted to move the storyline towards that, and that's why those dialogues. And trust me, I mean, not all friendship can turn into love or should turn into love. Uh-huh. All right. So friendship is it's a different relationship. It can stay where it is, and still that love can stay. That love can be where it is, but in that same relationship. So yeah. are you saying that love is romance or romance is love? Goes both ways. Huh, interesting. Well, if you want a technical answer to it, Faltoni, let me tell you one thing. Romance actually is not love. Romance and love are two different things. Yeah, exactly. Two Yeah. different things, right? Yeah. It's Well- the feeling of excitement which is romance. Right, it's that romanchak feeling. And the mystery. Yeah, exactly. So there could be love and there could be love sans romance. There may not be any Wait, romance. one second. When you say all this kind of stuff, it doesn't make sense to me. No man. No, I meant love sans SANS without romance. Because Sridhar, please tell her Shashi Tharoor is there in India, not we don't want one over here. क्या शशि दुनिया तरूर? के लिए एक Shashi Tharoor काफी है. हाँ, कुछ भी. Love sense. See, your sans man doesn't make sense to me. Yeah. Yeah. Hey, but good, yeah. Thank you so much. So what did he say is romance again? I'm writing down the definition, that's why. You are not writing on the screen. I know. My God, क्या बोल देती है Faltoni? Then you'll have to write a book because everybody's definition will be different. Yeah, Wow. exactly. Oh my God, you sound like a priest right now. I just want to say, oh. Oh my God, seriously, no. Why? It's just my opinion, and again, I'm not preaching. So what is your opinion again about romance? What did you say? Romance is about being cherishing each other's Being What did you say? eternal love. Romance is eternal love. Ah. Or yeah. Hey, ऐसे होता है क्या श्रीनिधि? Seriously? Why not? I mean, होता है. क्यों नहीं होता है? And it's definitely not influenced by movies. Trust me. Yeah, okay. It is possible. I can't imagine that influence a movie. I'm sure movie only put this thing into you. Hey, look, it works the other way as well. Huh. Real life stories are made into movies, and movies are replicated into real life cinema. So it works both ways, right? Okay. So it depends on Ah. who and how it's taken. Okay. Mm. Okay, we shall take it. So eternal romance, timeless. Yes. Romance So, is timeless. if you want to send a message to your loved one right now, Yeah. a romantic song which your loved one go, oh, pickle जाएंगी. क्या? What is that particular song? बताओ. Okay, for me, the mother of romantic songs has always been, and this is the only song that I dedicate to my love, and that is from Jojita Wahi Sikandar, Uh-huh. Pehla Nasha. Aww. I can't see. I don't know, or it's just my opinion. I can't see any other song coming so close to that with feelings, that one expresses to the first love. And this is what happened between me and my wife. So I dedicate this song to her. Totally. You know, totally, Faltoni. I will have to play the song Yeah. because this guy was the only person who had the guts to call up and tell us what love is Yeah. and dedicate a song to his loved one also. Yeah. And he said this is what happened to him also, right? Okay. Hey, wait, I so- want to ask you a Yeah. question. The song definitely came in later on. Yeah. It came very early before you met your loved one. So how much of your falling in love with your loved one depending on the song? Oh, no, it didn't depend on it at all, but it's just a feeling, when I saw her. Well, that's different, how Oh. I... Oh,
Okay, we're getting up close and personal right now, Faltoni. So, you want to say Srinidhi, something? I think we should Srinidhi. take this offline. I think, Hey, hello, it's what, take it consistent. offline? No, wait, Srinidhi. What you said just made us say one word, okay? Altu Baba. Huh. One reaction. Huh. Okay, Yes. the reaction that Alto and myself felt in this particular song, the hook of the song, right, when Srinidhi said that. Srinidhi, what did you say? That this is like when you, the feeling is generated every time you think about her or something, right? Is that what you said? The song is generated when Pehla... Yeah, this- Huh? Uh-huh. Yeah. Okay, so we've got to say, Yeah. So every single time... Yeah. That was very bad reaction, by the way. I'm sorry about that. It was not rehearsed properly also, by the way. Yeah. But I really think, That's whenever... because he's totally not in sync with me. In sync, why should I be in sync with you, man? Yeah, you- You can do whatever sync you want in the sync over there. We have a kitchen sync and bathroom sync also. Okay, fine. And of course, Srinidhi, after listening to what you had to say, I think the mood has changed right now. Oh. And I'm sure you're going to be giving a call to your loved one and saying, "Darling, I love you." Oh, is that what you're saying? We can say it on the air and Yeah. then we'll share it with her. Go on, I got a music for you in the background. Go on, say something right now. Say it. Hello. What? Ah. Oh, Huh. Hi, your message, your Te Amo message for your loved one. all right. Oh my God, it's just like you're making private in public. You're publicizing my private. What? Excuse me. No. Hold on. What? Exposing a private what? Anyway, Hello. okay. Hey, okay, no. yeah. We just wanted you Here it to is. express your love to her, man. That's all. Yeah. Okay, got it. Okay. Chandra, I love you from the bottom of my heart, and this love will be the same all the way till my last breath. So here's a song that I dedicate to you. Aha! Very good. Very good. I am very, very impressed. Very, very impressed. Hey, I'll tell you why, right? See, I don't know what love is. Huh. I don't know. Father definitely know because she can write volumes of love. That's a different issue. Hey, Alto, you know love. You definitely know love. Because you I keep falling in love. You're the know. recipient of your love keeps changing. I know. You can't finalize on one particular person. There's like so many people. What? Yeah, total incorrigible flirt you are. What? Yeah. Everybody knows. my So what? Yeah. So what? Yeah. Are you jealous? I'm not jealous. Then, man. so what? I'm Hello? not a flirt. I'm very seedy sunny. You're serious, Hari. Yeah. Right, Srinidhi? It's like saying Trump actually is a wonderful president. For some people, 71 million people, remember? Oh, now we'll remember that. Is it? Now we'll remember that. Very good. Probably, Falsani, you are Siri Sadi, but again, I know that Srinidhi is like, yeah, I agree with you. She can never be Siri Sadi. Huh? Yeah. No, that's not true. Hey, but good. I think now I know. And now we got one pehlu of what romance is. No, Romance. love we know already. We don't want to talk about love. We want to talk about romance itself. हाँ Right? जैसे वो mood बनाते हैं, right? Romance. That's the romance. Sorry, Srinidhi. Don't look at me like that. What I the know. heck? Poor thing. He's like, Srinidhi is like, oh my God, why did I even call these guys right now? सारे किए कराए पे पानी फेर दिया. Exactly. अबे Thank you यार, very much. Yeah. Romantic mood होता है, right? Roman- Not, I'm not talking about the condom moods. Hey. I'm talking about mood. Now the whole topic Okay. moved actually. So thank you for calling us right now, yeah, dude. Yeah. Yeah. Yeah, sure, guys. Thank Yeah, you. have a good one. And of course, Bajan, please don't get carried away what Faltoni keeps talking about. We're talking about, romance. What? Te amo. Romance जो कहते हैं ना, we're asking you what exactly it is. ये जो क्या फीलिंग है होता है भाई? बंदजान, चाहे वो कहे या ना कहे, बस आपको समझ में आ जाता है. ऐसा लगता है कि उड़ते ही फिरे. Really? Yeah. फिरते उड़े कि उड़ते फिर? उड़ते ही फिरे. फिर उड़े. चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया.
पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार, इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और ज़मीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार। Going out to Sharmila from her beau, Srinidhi. Beau or bae? I don't know. From a hubby to a hubbo. Cute song. Oh my god, I love the Yama Thursdays. Altu Baba. Okay, fine. I'm trying to digest and understand what it is, Bhajan. What? So please help me, because I get a different view of love from this romance. Oh, the definition of romance of Faltuni is very, very gooey. Altu Baba. Difficult to take. See, love is one thing, romance is another thing. The way you romance is a form of expression of love. That is romance. Jahan pe, romance, like you light up candles all around the place. The weather outside is frightful. My darling, you're delightful. Oh, that's romantic, is it? Yeah. So if I light a candle, so if you're saying that if at all there is no it's current. snowing outside, you have the fire hold crackling on. in the fireplace. Hold on. Huh. So you're saying if at all there's a power outage and I light candles, be romantic, is it? With your loved one, yes, of course. So your waste wax is romantic, is it? Hey! ऐसे नहीं देखने का, वो सब नहीं देखने का. मैं मूड बनाने की बात कर रही हूँ, तू क्या बात कर रहा है? I don't know what you're talking about. I'm talking about like, te amo, like when you're like in that romantic mood and totally like, the opportunity where love takes over.
She just not told me that romance is not love, but love No, takes I didn't over. say that romance is a form of You know expression what, of love. Falguni? I will tell you the definition of romance, right? Huh. Romance actually is a derivative of a Latin word, Okay. right? Huh. Something Roman types. What happened to you? When in Rome, do the romance. I was coming to that actually. I was coming to that. Actually, Parajan, this is saying, before all the romantic so-called languages of French and all came up, where they had romantic things, right? Huh. So they say that romance actually is a term derived from there. Huh. We talked about something which is like, a chivalry kind of a thing. Huh. A very, that kind of a stylish kind of a novel kind of a thing Huh. was considered to be a romance. Huh. So you're saying, but again, the definition what you're giving of romance is totally different compared to what the derivative of romance is. Everybody's definition of historically. romance is different, yeah. For two people, it could be sitting in a laundromat and watching comforters being washed. Wait, what's your photo, Fatoni? I When don't have know. you walked into the laundry mat? I have. Hello, I've also gone through the hard days in Oh, this country. the ones which you Although- owned. The no, ones which you owned. no. Probably was a very. When you have to go to a public laundromat, not public laundromat, at least in your apartment complex, you have the laundry thing. Now you're waiting there and you go and put your things for laundry and you don't want other people to you have some essentials So in two there. people sit there and check on the laundries. There'll be people who will be pretending to be reading a book or something and then you Nazri mili, dil dhadka. It doesn't types. happen. Ranjan, please don't go by this romantic notion of it doesn't happen. I go to laundry mats every month actually. So no, it doesn't Excuse happen. me. I've been to multiple laundry mats. No, you can't have Nazimli Dil Dhadka at the place at all. Why? I'm not talking about your public laundromats. I've seen what you go to. He goes to these, the one where you have those industrial. Yeah. I'm Very not true. talking about that. I'm talking about in your apartment. Sometimes, I don't know if it's there here, but in the East Coast, the way it used to be is a group of apartments will have a laundry room. Uh-huh. There'll be three or four washing machines, and then there'll be three or four dryers. Okay. And people will use it's community laundry types, but people will go use. You got to put those coins, and then you got to use that, na. So that's the way. And then people want to, you're just getting to the close of your cycle, you come back and you make sure you're waiting there. So Some when do you people- actually sit and actually wash the dryer? there are people who kind of sort of So was it nice? hang around. Again? How long? What I'm the not longest you sat there though? whatever, man. It's I'm probably- asking. I'm trying to. What do you mean? This show is not about me. I'm saying I've heard friends and I've heard people who say that they've met their significant others. While doing laundry. Yeah, while doing laundry. Exactly. So you're While saying that. doing laundry had a different connotation for Well, us. I have a different thing. I have a different take on Faltari. Very nice. In fact, you're saying that romance is actually washing your dirty linen in front of somebody. That is not true. I said Why romance not? That's is about being subjective. vulnerable, right? No? No? You don't think so? Being vulnerable to other person. So Oh my god. you're washing your dirty linen in front of somebody else. No, ish. I don't- Why do you have to I've got a beautiful song for you, Faltari. This is a song. Enjoy the song, Bajan. And give me a call a bit of what do you think about romance. What is romance? Come on, can you define it? Or just call up and say, Mwah, that's enough. I'll take it. We want to know. झुकता हूँ तो What do you want to Faltari? What is their definition of romance? क्या ये सबको होता है हमको क्या लेना है सबसे तुमसे ही सब बातें अब से बन गए हो तुम मेरी दुआ सजदे में यूं ही झुकता हूँ तुम पे ही आके रुकता हूँ क्या ये सबको होता है हमको क्या लेना है सबसे तुमसे ही सब बातें अब से बन गए हो तुम मेरी दुआ खुदा जाने के मैं फिदा हूँ खुदा जाने मैं मिट गया खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा तू कहे तो तेरे ही कदम के
तुमसे दिल की बातें सीखी, तुमसे ही ये राहें सीखी, तुम पे मर के मैं तो जी गया। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया, खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा। दिल कहे कि आज तो छुपा लो तुम पनाह में, कि डर है तुमको खो दूंगा। दिल कहे संभल जरा खुशी को ना नजर लगा, कि डर है मैं तो रो दूंगा। करती हूँ सौ वादे तुमसे, बांधे दिल के वादे तुमसे, ये तुम्हें न जाने क्या हुआ। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया, खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ, क्या ये सबको होता है। हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से, बन गए हो तुम मेरी दुआ। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया, खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा। And of course, बच्चन आज डिस्कशन है रोमांस के बारे में। ते आमो थर्सडे पे on the Pam Pam show, and of course we are going to dissect it further, Ranjan. I've decided further. I want to take a didactic approach to this particular thing, and I want to dissect what romance actually is. Is it like romance, like men keep crying for love? Is what it is all about? क्या? क्या बोले तुम? That's the अच्छा तेरे Shakespearean. हिसाब से that प्यार makes a man cry? I don't know. What? I don't know. I don't know. How many times have you cried? Many times, Fatrani. Yeah. But doesn't mean I've cried of love. Then? That's not pyar, like not the love. I've cried for love, as in I love somebody and I cry. But not the question of romance, what you're talking about. Oh, then? Okay. You're a waste man. I can't ask you anything. Because I have the answer to everything, Purusha. No, you don't have But any no. answers. You don't have any answers. Yeah. Eh, And of but course, this I'll one- tell you, even for the matter, Shakespeare's take on love. Huh. What is Shakespeare's take on love? Well, you know, because what is that thing that, hey, what is that particular story of his about children, man? Ah. That, 12-year-old and a 14-year-old kids. Huh. Love story. Huh. Romeo and Juliet, right? Is it Romeo and Juliet? 12 Yeah. and 14? Was that the age Oh, of I theirs? didn't know that. You didn't know that? They were kids, actually. No, I didn't know Yeah, that. I and thought the- they were 16 and 18. No way. Oh, wow. At that time, Father, they wouldn't live that long. Okay. Yeah, even there, right? Huh. Romeo actually implies that he's not looking for marriage with her, but to join with her romantically. Uh-huh. Now, when we say that romantically, Huh. it means that the guy is talking about something else. Okay. It's driven by passion. Okay. You sounded like a bee, actually. I don't. No, actually, no. You sounded like a fly out of SWAT right now.
Fatak! What a choice of show for today. My goodness. What? It's a you Anyway, don't but like. Falguni, why didn't you do this? Why didn't you tell me? You don't like it, Alto Baba? Change the topic. Excuse me. I Yeah. didn't say it that way, dude. Yeah, if you can't change the girl, change the girl. Oh. Nowadays you're taking too much of lessons from me, huh? But it's good actually, Father. I see that impact of me on you. Yeah. And Bandhujan, that's why I say I have total hopes on the fact that Excuse me, what did you eventually just say? What? Your impact on me. Yeah. Yeah. Matlab, I mean, it's a good way. Yeah. Come on, people I have, to actually take I have to take a Tylenol or a Motrin every time I have a headache before I come on the show. With That's you. what, is that what you did with just you, now? With you, yes. Is yes. that what you did just now? Yeah, You yeah. take the one on the shelf right now today? Oh, that's Did you know they expired? expired? You probably are not working in your proper faculties right now. Okay, very All good. your faculties are messed up. But that's okay, Alto Baba. I think romance means I don't know. I don't know about our bandhus. They're like such See, scary Falguni, movies. They don't want to call. you should actually do one thing. I'll tell you what. Over here, I'm the person who don't know what romance is. You seem to have known it. Like, okay, I'll tell you something. I came across a real life situation. This is why it inspired me to do Tiyam on Thursday. Huh? What is It was one of our dear bandhu's birthday, right? A couple of days ago. Okay. There were so many people there. When I say so many people, I'm just talking about it doesn't necessarily mean just two people have to be there. It's just a man and a woman or whatever, man and a man, we're equal opportunity. What opportunity? You know what I mean? What? I don't know. I'm not saying- What is man and woman and who else can be there? Man and a woman? huh? I'm saying that they don't have to be in secluded areas, or they don't have to be in, just the two of them in the privacy of their home or whatever, right? Uh-huh. It could be that a romantic moment can happen between two people who are in love. In a crowded room also, amidst other people also. Very so good. it was this bandhu's birthday, but I thought there was a very romantic gesture that happened in that particular. I thought it was the sweetest thing, even though it was done in a in a very funny kind of way, where this gentleman proposed to the love of his life. On that particular day. It wasn't like exactly proposing ki marry me, but it was like, okay, you're not getting emotional, so let's make you cry. This is what he said, and he gave her a ring. It actually was so romantic that What's there wrong was with not that? I one. give a ring to everybody. Huh? Yeah, if I want to call somebody, I just give them a ring. Yeah, ring वैसा वाला ring नहीं वो ये अंगूठी पहनाते हैं, right? Oh, the finger Yeah, ring. it was Okay. the love of his life, and it was such a sweet moment. I mean, all the women, like almost every woman in that room, teared up. Oh, really? Yeah, it was like really, really such a sweet thing, which that was completely unexpected that happened. So are you saying that if you give a ring to a woman, it is like, romance? No, man. I'm saying something spontaneous, something really sweet, something from the heart. And you do it in complete acceptance of the other person without expecting anything back in return. That is romance. I mean, I don't know. That's what I Hey, feel. I really think there was something expecting return. That's what I'm trying to tell you. It's more transactional. Eh! What? That's what I'm saying. I'm saying romance is transactional. No. You do whatever you want because you want something else in return. No, that's not true. Of course, you can't attach selflessness into it because romance is basically about somebody wanting something, right? And that's what it's all about, right? Don't you think so? इसीलिए तेरी शादी अभी तक नहीं हुई आलतू बाबा. हाँ. Oh my God! I have a different reason why my shadi didn't happen. Why? Tell me. Because there's nothing which is like so interesting about the institution in the first place. Oh my God! Okay, I'm going to call out to all our bandhus right now. Pick up the phone and give us a call. Vishal Arora ji, I see you logged in on Facebook and you're like giving other people, like you're telling Meenakshi ji, kal ye dialogue batana tha, ye sab. Abhi aap call karke hame batao. I want to know from you, a fellow Virgo. Please call in and share what is romance according Oh my to you. God, fellow Virgo means you're saying even he's distracted on. Fellow Virgo. Virgos are generally not very romantic. Even his ideas misplaces are telling me. No. Huh? Okay, Pranab ji, I saw your comments for me. So please call in and share. We'd love to hear from you as to what your version of romance is. So Meenakshi ji, yes and chalega. Deepa, Meenakshi, all scaredy boobies. They don't want to call in and share what Hey, romance is. because they also don't know what romance is, Faltrani. I'm telling you again, people just think they know romance. Srinidhi, I'm sorry. I know you probably are experiencing it. It's fine. But generally, when you actually experience it, you will not know what exactly it is. Kya? Faltrani, are you going to play a song for us or no? Yes. What song is this? Talk about it. Where you become mast magan, Alto Papa. Hey, again, just now. In that feeling, you just get immersed. Uh-huh.
Immerse in the feeling. Immersed in that, you're swept over by this feeling of love. You're swept over or sweat over? Swept over. Oh my God! Exactly Yeah. what Srini talked about. Yeah. करे जी हजूरी Oh my God! मांगे है तेरी मंजूरी कजरा सियाही दिन रंग जाए तेरी कस्तूरी रैन जगाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए ओ, चाहे भी तो भूल न पाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए Batujan, call karo 408912247 Probably this song is going to go into a break at Nafadwani. See, I think people are still not able to understand because right now, based on what the song is, beautiful song, Shankar Sala composition, right? Yeah. And who's the lyricist of the song, Fadwani? Amitabh Bhattacharya. See, I'll tell you what. Now, the idea of what they're giving the song so far, the songs you have played in this hour, have a different meaning of romance compared to what you are saying it. Really? Mm-hmm. How? Yeah, because you're saying, oh, romance is about the selflessness, all this thing, no? अबे, Not expecting anything in return. मैंने उस नहीं बोला, मैंने बस ये बोला कि it depends. Romance. Not expecting in You're return. completely like derailing what I was thinking, Altu Baba. Well, Romance is तुम्हारे लिए जो romance है किसी और के लिए romantic ना हो. Uh-huh. It's possible. Yeah. But It's- again, even this song is talking of full submission. No, it is not. It's talking about exhilaration. It's talking about being completely lost. Same to you, Faltani. Very good, huh? Huh? Something you said, exhalation, something. Exhilaration. I said breathe. It's that feeling of ecstasy. Not the pill. I'm talking about ecstasy that sweeps over you when you're like, you know, this good feeling that Uh-huh. you feel this warm, gooey feeling When in you your bite heart. into a burger Eh? or a vada pav. Aye. That feeling? I totally get the feeling. Oh Faltani. God. Anyway, come to the Belgian. Right now, we're going into a nice song break. Give us a call. I want to know what romance is according to you. 408-912-2479. रैन जगाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए ओ, चाहे भी तो भूल न पाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन तेरा नाम जोगिया जोग लगा के बखरा रोग लगा के इश्क की धूनी रोज जलाए उठता धुआं तो कैसे छुपाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए चाहे भी तो भूल न पाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए
मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए ओ चाहे भी तो भूल न पाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन तेरा नाम अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा हमारे जैसा रेडियो कहाँ मिलेगा आओ तुमको दिखलाता हूँ रेडियो की एक रंगी शाम बोलो 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 पैम पैम एन इवनिंग विद पैम पैम अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा हमारे जैसा रेडियो कहाँ मिलेगा दिखलाता हूँ रेडियो की एक रंगी शाम बोलो 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 पैम पैम एन इवनिंग विद पैम रेडियो का डायल तुम घुमा लो हर चीज को तुम आजमा लो दिन भर की टेंशन भुला दो जी भर के हंसना हंसा रेडियो के डायल तुम घुमा लो हर चीज को तुम आजमा लो दिन भर की टेंशन भुला दो जी भर के हंस लो हंसा ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा हमारे जैसा रेडियो कहाँ मिलेगा तुमको दिखलाता हूँ रेडियो की एक रंगी शाम बोलो 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 पैम पैम एन इवनिंग विद पैम पैम सीने से हमको लगा लो रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा लो ट्रैफिक ये सर पे चढ़ी है बिहार का साथी बना सीने से हमको लगा लो रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा लो ट्रैफिक ये सर पे चढ़ी है बिहार को साथी बना लो अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा हमारे जैसा रेडियो कहाँ मिलेगा तुमको दिखलाता हूँ रेडियो की एक रंगी शाम बोलो 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 पैम पैम एन इवनिंग विद पैम पैम हाथों में स्टीयरिंग को थामो खुशी हो या गम मुस्कुरा लो स्पीकर पे इनको लगा लो राइट टाइम का फन आजमा लो
हाथों में स्टीयरिंग को थामो, खुशी हो या गम मुस्कुरा लो, स्पीकर पे इनको लगा लो, बॉयफ्रेंड का फन आजमा लो। अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा रेडियो कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ रेडियो की एक रंगी शाम, बोलो 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 बंधु। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा रेडियो कहाँ मिलेगा भाई। You are listening to Radio D Hotties, powered by Mahima Creations. The views and opinions expressed by the hosts, guests, or callers of this show do not necessarily reflect those of the staff or management of Radio D Hotties. The content broadcast on this show is meant for informational and entertainment purposes only. Radio D Hotties, the best and hottest Indian radio network in the entire world. Mahima Creations. Proudly present Premier Evening Drive Time Show. Bam Bam! Yes, you heard it right. Bam Bam! Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Let's beat the traffic. नमस्कार నమస్తే నమస్కార వణక్కం खुश आमदीद సలాం అలైకుం सत श्री अकाल మీకందరికీ వందనము जय स्वामी नारायण जय श्री कृष्ण जय जनेन्द्र हमारे इस्माइल भाई बंधु को बोलते हैं या अली मदद मलयाली मतलब बोलते हैं सारे फीजी मतलब नीसा मुला ब्रजन एंड हमारे फिलिपिनो बंधुस ऑल फी आउट देयर कमास्ताका मब्यूटी ¿Cómo está acá Arnold Pedregal? Nice to see you joining us on Facebook. Thank you so much for telling us that you are our Filipino bandhu from the East Bay. And bandhu, yeah, of course, yes. Let me tell you about this. आज का topic है Te Amo Thursdays. Actually, what Te Amo is a Spanish word, right? te amo, te amo, tu pas. Oh, that's also a song. That's also a song, definitely a such song. cute And my God, there was not time for you to sing a song. The cue was actually for you to tell Yeah, some dialogue over there. it is- not sing a song. it's in- Kida jo hai na, seriously, Father. It's in Espanol. Espanol. And it's also in Italian. Ti amo. Italiano. Ti amo. Huh. Si, spaghetti. Kya Oh. spaghetti? Mozzarella cheese, yeah. What? Bologna. Hey, Portobello mushroom. Yeah, Portobello, whatever. Portobello, right? No. Okay, Altu Baba. What do you say for Baba Ganoush? No. What is Baba Baba- Ganoush is gay. It is Baba yeah, Ganoush is Mediterranean. Greek. Mediterranean. Mediterranean. Okay. All right, but the point of today is Te Amo. Te Amo, actually, I'll tell you what, romance. Romance is cross-cultural, universal. It happens everywhere. No, Faltu, why are you crying, Faltwani? I just want, I'm feeling so down, Altu Baba, कि तुमने break में Hey, मुझे कितना hey, torture किया, hey, कितना hey. torture किया. Badhujan, I wish I could show you. I took a video and I sent it to the WhatsApp group. But I wish I could tell you how evil this guy is, and he's laughing and he kept telling me the people will not enjoy romantic shows. So no I need didn't to do- say that. I Yes. didn't say people will not enjoy romantic show. I was telling you people don't know what romance is, Faltwani, because romance is a... okay, let me ask you one thing. When you say romantic notion, what does it mean, Faltwani? Romantic notion means Like, she's an English major, a major English, by the way. She it's obviously like hard to find. it's like an Utopian reference yeah, to it's like an idealistic notion. Idealistic it's where means- nothing can go wrong. nothing wrong. Nothing, Everything is so perfect. and it's fictional, right? Utopian means fictional. That something's non-existent. But possibly a good thing, right? Yes. So romance is not existent. But the thing is, it's actually you're expecting to live in something which is not possible. Namaskar, आपका हाथ से पैम पैम के ते अमर थर्सडे में who's this? Hello, hi. Pam pam, pam pam. Pam एक और pam. एक और बार बोल दो. Pam pam. Very good. Pam pam के हाँ, गुण गा रहे पैम हो. पैम के गुणवत्ता नियंत्रण विभाग से ये विभाग आया है. आपका आवाज नहीं आ रहा है. हेलो हेलो कि तुम लोग पूरा हेलो? नियंत्रित हो गए हो हेलो. और स्वच्छ नहीं है, कुछ भी बोल रहे हो हमें, तो इसलिए अरे मैंने फोन हम किया. नहीं, मैं ठीक बोल रहा हूँ. मैंने ये क्या बोला? रोमांटिक नोशन में है, उसका आज तेम मोड में है वो. अच्छा देखिए सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं. हाँ, आप विषय को मोड़ो मत. विषय से भटको मत आप. हमने पूछा आपका रोमांस में आप माहिर हैं.
नहीं नहीं है? माहिर है Of course है। वो मुझे मालूम नहीं वो- प्रैक्टिस मेक द मैन वो उन परफेक्ट, पे इनको तो निर्भर है। मौका मिलता रहता है इनको, हाँ राइट मौका बनाते हैं ये, क्या राइट? आपको रोमांस में विश्वास है Of course. और क्या आप मानते हैं कि लाइफ में रोमांस होना चाहिए? और तीसरी चीज आपके हिसाब से रोमांस क्या है? वाह, हमारा आलतू बोलता है रोमांस नाम की कोई चीज है ही नहीं, अरे क्योंकि इट इज वेरी आइडियलिस्टिक, इट अरे, डजंट हैपन। जैसे कि भगवान, राइट? भगवान है, मानते हो? हाँ हाँ, जैसे रोमांस से मान लो। हाँ मान लो। क्या मतलब क्या? कैसे कैसे उदाहरण दे रहे हो भाई? नहीं देखो, भगवान को इसमें परेशान करके कोई आ सकता नहीं है। नहीं, देखो भगवान when से it is- थोड़ी शांति से रहना तो हाँ देखो, there is no fact. If it's not a factual thing, I can argue. If it's something of your belief, I can't argue. I'll agree with you on this. वो भगवान भी वहाँ पे ना सर खुजा के सोच रहा होगा कि क्या ये क्या बनाया इस नमूने को मैंने इसको मैंने, क्यों बनाया? हाँ क्या नमूने बनाया मैंने। नहीं, बट ये बताओ सर, रोमांस को बोलते। अच्छा, आपसे पूछते हैं, रोमांस का हिंदी में भगवान की शायद उस समय थोड़ी स्वास्थ्य अस्वस्थ थे भगवान, जब तुमको बनाया शायद आलतू बाबा। कैसे थोड़ा उन्होंने बनाने के टाइम पे थोड़ा उन्होंने ऐसे मुंह मोड़ लिया था। नहीं वो मस्त मगन थे। ओह, हाँ। और रोमांस में थे वो तो। हाँ, रोमांस में थे शायद। अच्छा, बाद में आप हमें बताइए सर, रोमांस का मतलब हिंदी में क्या आवर्तन है उसका? व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ रोमांस इन हिंदी? प्रेम? नो, प्यार? नहीं, प्रेम नहीं है। प्रेम तो प्यार है, लव है, वो सब तो है। रोमांस को क्या बोलते हैं? आशिकी। हे, that's it. नहीं, आशिकी इज लव, इट इज जस्ट ए उर्दू वर्ड फॉर द हाँ। सेम थिंग। रोमांस इज एक भावना है, मीन यू वांट टू डू समथिंग, मतलब तुम अगर किसी से, देखो रोमांस कोएग्जिस्ट विद लव, वो मतलब अगर प्यार नहीं है तो रोमांस नहीं है। हाँ, हाँ। तो हाउ डू यू से Right? दैट इन? और- हाँ, हाउ डू यू से? रुको हाँ। सुनो पहले। तो जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसको देख के या उसके लिए कुछ करने के तुम जो भावना जागृत होती, जो तुम उसको देख के आनंदमय हो जाते हो, आनंदित हो जाते हो, उत्साहित हो जाते हो, दैट भावना इज रोमांस। हाँ। यस प्रेम लीला। So love, romance and love coexist. हाँ, And you can, and there can be love without romance. हाँ माय पॉइंट। But they cannot be romance without love. क्यों सर होता है? आपने नहीं देखा द बैचलर, द बैचलरेट कितना तो रोमांस वो सब करते? छोड़ो, तो ए, वहाँ मत जाओ। एक That is a मिनट, lifestyle. ये वो भटका छोड़ो। रही है हमें, भटका रही है। नहीं, that is a lifestyle. That's not real. वो छोड़ो। हाँ। But जैसे मैंने बोला ना, so और इन अदर वर्ड्स प्लेन सिंपल में कैसे समझाऊं? जैसे या let's see in the common word, जैसे किसी को बोलोगे राइट, हाँ लोग क्या करते हैं, हाँ साल में एक दिन आता है, हाँ फरवरी 14 तारीख को एक दिन आता है, हाँ राइट? हाँ हाँ, तो बोलते हैं वैलेंटाइन डे, राइट? करेक्ट ठीक है, हाँ, ओके। सो द सिंपलेस्ट एग्जांपल इज, जो तुम 14 फरवरी को पैसे खर्च करते हो, ये करते हो, वो करते हो, हाँ just don't do it once a year. हाँ, Try to do different things throughout the year. That is romance. correct. An expression of the love that you feel within you for another person is romance. Exactly, yeah. Yeah. wait, say it again. The expectation what? Not expectation. तू ना बस words घुसाड़ता रहे। मैं बोला the expression of the love that you feel within you for your significant other, and I'm talking about the significant other specifically, As is in what? romance. When you significant other, it could be No, anybody, right? it could be that quick hug that you give that person, or you could be a quick peck on the cheek, or it could be the fact that you leave them little notes. Something Thank you physical. for what you did. No, और जाके बर्तन करो या उसके कपड़े खड़ी कर दो, लॉन्ड्री कर दो, सिंपल थिंग. Sir, Don't have to ये spend money. सर, मतलब ये देखो, यही पे थोड़ा यहाँ विषय थोड़ा भटक जाता है। क्यों? When you say do this, ये भी सेवा हो गया ना? ये It's सेवा not भाव हो गया seva. ना? ये सेवा भाव हो That's गया ना? not seva. That's not seva. See, it's not only about spending money or doing Correct. something lavish. That's not only translates to love or romance, right? Yeah. So, हाँ, तब मतलब feeling for somebody, उसके लिए कुछ करूँ, right? How to make her special. हाँ, Those are the things. So वो romance है. तो love तो है. तो love के ऊपर तुम करते हो, that is romance. And then, as I said, हाँ. there can be love without romance. Dry भी हो सकता है, but there can never be romance without love.
Why can't we have a romantic notion about something and do to everybody with? But the way you're saying it is like you're doing something without expecting anything in return, like what Faltoni talked about a few minutes ago. Correct? that is love. That is not romance. Romance can be little tricky. वो दूसरों के लिए अलग लोगों के अलग उसका मायने हो सकते हैं. But ऐसे बोलते हैं ना, love is unconditional. रोमांस में आलतू बाबा एक चीज है कि इट इज काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियस. इट्स समथिंग दैट मेक you feel exhilarated, you feel good about doing something for your loved one. You know that this will make that person happy, or you know that this will put a smile on their face, or you just want to do it because they're there in your life. That's romance. Yeah, और उसका एक और एंगल ये भी है कि लोग बोलते हैं ना क्या ये प्यार हुआ शादी हो गई, then it dries out, right? So keep the life में रोमांच रहने के लिए you should feel the attraction for each other. Romance has to be there. So you're saying there has to be something physical in the whole equation. Hey! He's an attraction. Hey, don't jump He's into an conclusion. Hello, sir. He's an attraction. What did I say? Yeah. Hello, excuse me. Yeah, you talk. Why? You guys are like, a perfect example. You and father together, like, are putting smoke screen there. Hey! I'm saying, yeah. Hey, hello. You wanted to say a peck on the cheek, tap on the neck. आदत से मजबूर हो. बोलो. नहीं, hello. आदत से मैं मजबूर नहीं, आप मजबूर हो. अबे यार वो रोमांस होता है जो स्पॉन्टेनियसली एक अच्छा फीलिंग आता है, वो है. तू हर एक चीज, इसीलिए मैं बोला प्रणव जी इसको कोई समझ में नहीं आता है, इसीलिए आज तक सिंगल है. अच्छा. हाँ, तेरे को रोमांस भी समझ में आना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ओह नहीं वो क्या ना कोई अट्रैक्शन वाला नहीं आया ना इक्वेशन अभी तक. तुमने एक बहुत बैड जोक मारा था ना, रोमांस मतलब men are crying. या वही हो गया ना, मतलब मार जो ये सब रो क्या तब जाके रोमांस बनेगा ना. Buy a ring and tutor रोमांटिक हो गया ना वहीं पे. आजकल के जमाने में कोई बर्तन नहीं मांजता है, सब कुछ वो डिशवॉशर में लगाते हैं. फिर भी साफ तो करना पड़ेगा ना, वापस जाके निकालना पड़ेगा ना वहाँ से. तो क्या हुआ, काम हो गया ना वहीं पे. तो फिर किसको करना चाहिए वो काम? किसी को भी करना चाहिए. I'm not saying it. So मतलब why can't we do it? But तुमने एक अच्छी बात कही है indirectly या अनजाने में. तुमने बोला romance, right? लोग रोते हैं. So there are some people who do things so shameful कि उनको रोना ही चाहिए. सर मैं एक मिनट मैं एक चीज बोलता हूँ. मैं कभी अनजाने में बोलता नहीं, बोल के बाद अनजान बनता हूँ. क्या उनको रोना ही चाहिए? क्यों? हाँ ऐसे करते हैं ना, ऐसे रोना चाहिए. ऐसे चीजें करते हैं, रोना चाहिए उनको. Exactly. Lack of understanding, lack of empathy. Means totally क्या जैसे इनके फाल्तोनी के लैंग्वेज में totally waste fellow होगा. तो या रो भाई, तुमको रोना ही है. Exactly. I think when there is no romance, it'll always be romance. Men row, right? Yeah, men will row. Yeah. row your boat gently down the stream. In their own tears. Well, I'll tell you what. I really think romance is overrated. If somebody wants to differ in this, please give me a call. I don't think it. Hey, wait. Ask Pranam. देखो तुम ना, you repeat yourself. उस दिन एक हमारा थीम था लव के ऊपर. तुमने बोला लव इज ओवररेटेड, आज बोला रोमांस इज ओवररेटेड. Sir, that day also was a love theme, as in Te Amo theme. Today we're talking about romance. इसीलिए तुम्हारा ये हाल है. नहीं सुनो एक मिनट. What I'm trying to say is, मेरा बात मानो. It's okay. See, of all the beings in the world, very good. Of all the beings in the world, we're the only people, we're the only species which actually create so much of a ruckus about romance. Right? Even animals do romance. So you're saying that if at all I'm romancing somebody, right? You're saying that I can't romance anybody else? क्या? अरे लोग तो रोमांसिंग द स्टोन भी बोलते हैं. तुम अगर जाके कोई शिल्पकार है तो वो रोमांसिंग द स्टोन है. हाँ. So yeah, you can romance different things. Why not? Yeah, so you can romance not one but many people also, right? But वो you cannot be a Casanova. That is different. That's a lifestyle. You're labeling some right now. Don't label it. That's what if somebody genuinely? What if somebody genuinely? Being a Casanova is different. No. What if somebody? There is no love there. Wait, so a Casanova. So that's where that's the only thing that I differ from you, Pranavji, where you can have romance without love. You can romance somebody without feeling the deep feeling of love for them. So again, romance is something with an action. It's just a feeling of what?
घूम फिर के वही जाता है. देखो Okay. देखो सर, No worries, no worries. घूम फिर के नहीं, the fact is that right, how much ever you break your head about it, use all the flowery-ness into it and all the euphemisms you put into it, it still comes down to the fact of transactional No, stuff. I know where you're going, अरे, Altu Baba. It's देखो, not what you don't think. confuse lifestyle with feelings, okay? Ah, exactly. There are Exactly. lifestyle choices people make. That is- Exactly. so what is lifestyle choice? Casanova's lifestyle choice, Padmani? Haha. Is it? I don't know. I'm asking. Go read up, okay? I'm So, not. Pranamji, let's ask you. Do you believe in romance? Of course. Okay. Do you believe or do you do romance? Do you romance? Yeah. Do you romance? I romance somebody, yes. Do you romance? Yes, that's right. Exactly. Why should you be ashamed of it? I'm telling you. There's nothing to be ashamed of. Why- I think my more point- kudos Exactly. to Make yeah. kudos मैंने to बोला you. ना, love and romance have to coexist. So I'll tell you what this. Don't get me wrong. I'm telling you this, okay? Because I want people to actually come out and say it. Like Srinidhi came out and said, Leo calling him. People don't talk about it. People many times they don't know if what they're actually doing is romance or not in the first place. No, I'll tell you, a lot of relationships fall apart because There's no romance in there's it. no romance in the relationship. Yes, absolutely correct. Yeah. Okay, I can't agree with anything right now because we're still halfway through the whole show. No, even today, Yeah, because you even don't understand. How will you agree or disagree? no, सर because मैं क्या सर मैं तो अनजान बंदा हूँ सर मैं तो बस सीखने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे आप बस ज्ञान दान करो To मैं बस agree or disagree, you have to first understand. नहीं, तुम्हारा I- बहुत lacking है अभी. sir if I don't question a particular thought process how will I understand it I need to dissect it further नहीं देखो इस विषय में तुम्हारा ज्ञान अल्प है. हाँ अल्प है सर इस विषय तो में तुमको बहुत सर में सर अध्ययन करना पड़ेगा. सर एक दिन क्या है? मिनट सर मेरा नाम आलतुक बाबा है मेरा जो पेन है मेरा एक ज्ञानी है मतलब अल्प ज्ञानी तो आलतुक ज्ञानी अल्प ज्ञानी होते हैं तो द पॉइंट आई एम मेकिंग हियर इज आई एम dissecting this particular thing on air so everybody out there can actually brighten their self up enriching them right now yeah. ये मेरा रोमांस है आप लोगों के लिए Nonsense. ऐसी No, बातें why करते हो इसलिए लोग फोन नहीं करते और हाँ। डरते हैं. ऐसी कोई बात नहीं लोगों को मालूम नहीं है देखो विशाल जी आई डोंट नो व्हाट लव इज बोलते हैं हाँ, And, I don't know what love is. I don't know what romance is. and Vishal ji, मीनाक्षी जी आपके हाँ, तो बेस्ट इसका मतलब उनको खाना नहीं मिलेगा रात को. thank you. Actually, खाना नहीं मिलना चाहिए. खाना नहीं मिलना चाहिए. If you're married and you say I don't know what love is, I don't know what लोगों romance का is, ना- खाना नहीं मिलना चाहिए. बंधुजन आई एम सॉरी Exactly. ये हाँ। प्रणब जी और फाल्तुनी मिलके आप सब लोगों के पेट पे लात मार रही है मार रहे हैं ये साथ पे मिलके मार रहे हैं एक मिनट अगर कोई हमारे डार्लिंग बंधु लेडीज क्या या जो भी बोल रहे हैं वो उनके लव्ड वन को उनके दिल पे लात मार रहा है तो हमें पेट पे मारना बिल्कुल ना जायज है. ये दिल पे लात कहाँ से आ गया यार हाँ क्योंकि आई डोंट नो व्हाट Yeah. लव इज बोले तो क्या है. Okay, probably they don't know. हाँ, They don't know what romance is. Love, you know. He didn't say. He said. he said I don't know what's love or romance. कुछ भी random. Probably, yeah. They're like Bhola, like me, you know. No, he. Abhinani like me and Uh-huh. not like you guys and Pranab ji. Pranab ji, but thank you so much. आपने तो यार आप तो शेर दिल हो always यहाँ पे call करके अपना point बोल देते हो. हाँ. But again, very good. So thank you for helping me express my point of view on this one. Yeah. So he also said Okay. it's actually What is your transactional. point There of was view? no- He didn't there express was your no- point of view. Hey. There was no point at all in your point of view. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, there was Thank no you. point because of the big circle there. But thank you so much, Pranav for calling So- in. Hey, before you go. A song which you think is uber romantic, Yeah. and it has to be romantic, not love, not like worship and all. All the songs are worship and all. So something romantic which you want to sing or you want to play for us. No, that song which you generally play for Kishore Kumar is not going to work. Yeah, I know. That is love. See, right? That is love and eternal love. Uh-huh. So yeah, definitely I want to ask you to play that song. हाँ. एक और ऐसे दो गाने और हैं जो जिसमें mostly I think it's kind of romance. हाँ. एक तो I think you should play भावरे की गुंजन. Okay. I think that is more romance. But don't you think that's exactly what I'm talking about, transactional and situational in terms of some physical element to it? तो फिर से Season oh of my spring, goodness. yaar. Bavra and Fool, what is reference in Indian cinema? No, it's not transactional. No, there is Bhavra Fool reference, right, in Indian cinema. Bhavra is the fool who goes to the fool, right? तो फिर तू क्या बोल रहा है रूप तेरा मस्ताना. नहीं. देखो एक और गाना है which is पल पल दिल के पास. ये दोनों गाने में बहुत रोमांस है. तो फाइन आपके लिए भव्य का गुंजन लगा देंगे हम लोग. बट उससे पहले आई वांट यू टू से समथिंग नाइस टू योर लव्ड वन. समथिंग ऑन एयर थोड़ा रोमांस करो. कोई शर्म की बात नहीं है. आराम से करो. रेडी?
या मैंने तो ऑन एयर क्या क्या बोला है, मैं क्या बोलूँगा? बोलो सर। करे ऐसे नहीं बोलेगा, दैट्स नॉट रोमांसिक बाय द वे। हाँ एक मिनट, कोई सोच कुछ इमोशनल हो जाए, दिल की गहराई में झांक के। अरे मैंने अभी लिखा था ना। हाँ क्या वही लिखा था निकाल, मैंने? वही पढ़ो ऑन एयर। प्रणव जी एक्सप्रेसिंग हिज रोमांस ऑन एयर। हाँ, मैंने लिखा, मैंने अभी एक कविता लिखी थी अपने सिंदूर जुबली पे, उसका जो लास्ट लाइन है मैं याद करने की का प्रयास कर रहा हूँ। करो करो आराम से करो। यस मैंने लिखा था कि तुम मेरे दिल में इस तरह जगह बना गए कि एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक मुझको अपना बना गया। Oh my God. आहा 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 ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। देखो so that was actually this is a romantic action. या तुम्हारे सिर के ऊपर से गया, बट फिर भी नहीं थैंक यू सर, फॉर दैट। अरे हमने क्या कॉम्प्लीमेंट दिया आपको? 1 2 3 नहीं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो लंबू के लिए बोल रहा हूँ। सर आपका विचार उतने ऊपर भी नहीं थे, चलेगा। पकड़ लिया हमने। बट मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बाबा। I know. You're awesome. I know sir, thank you very much। मालूम है Yeah. कभी कमेंट नहीं किया सर, कभी कमेंट नहीं किया। देखो सर, अज्ञानी बनने में एडवांटेज ये है कि यू गेट टू लर्न न्यू थिंग्स। हाँ मैंने Yeah, you सीख get लिया। हाँ benefit of doubt. हाँ, तो मैंने सीख लिया कि आप और फालतू सेम टाइप सोचते हो, मतलब जो भी है मुझे मालूम है वही है, लेकिन आप तो उसको फूल वूल सजा के बोलते हो कि हाँ ये रोमांस है। मैं बोल रहा हूँ यार समथिंग फिजिकल, सिंपल एंड प्लेन। अरे हाँ, इट इज फिजिकल ट्रांजैक्शनल। कुछ नहीं है। It It is is a not. verb more than a noun actually. What? Yeah. It's an adjective, Whatever. sort of. That's what you guys want to call it. But we still love you also, Baba. I know, So, sir. Thank you. God bless you. Don't romance me, sir, please. बाप रे। Thank you so much, sir. आप सुनते रहेगा आपका वो भंवरे के गुंजन डालेंगे आपके लिए, आपके स्वीट हार्ट के लिए, ठीक है? Absolutely. Okay, thank you so Thank much. you so much. Thank Have a good one. Thank you. Bye bye. एंड ऑफ कोर्स बजा गुस्ताखी माफ हो, फालतू रानी की हाँ? उतना तो जानती नहीं है इसके बारे में। जो भी जानती है इन्फॉर्म्ड, मिस इन्फॉर्म्ड, हम बिकॉज़ शी इज आप- मिस एंड शी इज इन्फॉर्म्ड ए बाय द इंडियन सिनेमा। लेकिन प्रणब जी ने क्लैरिटी लेके आए इस गाने के साथ। सुनो क्या? फालतू रानी, ये होता है रोमांस। सीखो। कौन सा फिल्म मालूम है फालतू रानी? कल, आज और कल। किशोर कुमार की मधुर आवाज में जन। दिस इज स्टारिंग द रियल लाइफ हस्बैंड वाइफ, राइट? बबीता एंड डब्बू है, व्हाट्स हिज नेम? ओके, करीना कपूर's मम्मी डैड। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू। मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू। मैं आया हूँ दुनिया में तेरे लिए, मेरे दिल में झूमे तेरी आरज़ू। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले तो रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। एंड ऑफ
आपका बच्चा रणधीर कपूर स्टारिंग मूवी along with बबीता बनर्जी. What a nice song. लिरिक्स कौन है आपको जान के मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन तब तक ये गाना एंजॉय कीजिएगा. शंकर जैकी सिंह म्यूजिक डायरेक्शन है बनर्जी फ्रॉम द मूवी कल आज और कल. We're talking about romance. We're talking about Te Amo Thursday. So मैंने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया adding romance to the mix because now nobody knows what romance is. गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा ये इकरार है. गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा ये इकरार है. तू इतना समझ ले मेरे हम सफर, तेरे प्यार से मेरा संसार है. भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल. तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए. भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल. तेरे लिए हो तेरे. Hey, it seems to be Fatwani, the whole pattern of all the songs people are picking, right? It's, I don't know, man. It's more like submissive. Eh? I might be wrong. Correct me if I'm wrong, but come on, give us a call here. Let me know. 408-912-24. Let me finish the phone number, ना. जब मैं बोल रहा हूँ बीच में मत बोल कर यार. 408-912-2479. बोल. No, बोलो. No. वेरी गुड. हाँ बलजन, तो कॉल कीजिएगा 408-912-2479. आज ते अमो थर्सडे चल रही है and we're talking about romance, right? हाँ. And thank you everybody who actually called in. Please don't mind, गुस्ताखी माफ. अगर मैं आपके पॉइंट व्यू से थोड़ा डिफर कर रहा हूँ तो क्या करे, आई एम डिफरेंट. एक्चुअली बनजान, मैं ये बताना चाहती हूँ, आना जी कुछ लिखी है कि रोमांच that is romantic. romantic. That is that feeling of excitement. Acceleration. That's Well, what she's I mean. right. She's right. Yeah. That's why I'm telling you something physical, Faltwani. Hey, I'd like to know, हमारे जो काफ़ी सारे कवि शायर सभी हैं ना, हमारे इतने सारे बंधु जो सुनते हैं हमें, उनसे पूछना चाहती हूँ. रंजीत सिंह भाटिया साहब, आप भी सुन रहे होंगे. आपसे पूछते हैं कि आपके हिसाब से रोमांस क्या है? क्या रोमांस है लाइफ में, होना चाहिए? कॉल करिए 408-912-2479. I'd love to hear from you. See, Altu, जैसे तूने बोला, it's an action. It's not something that's action and it's not physical. Romance can be not necessary. See, you can look at a couple and you can say, oh, what a cute romantic couple. Yeah. Because of certain things. Like there's one of our Bandhu couples, right? Whenever I look at them, regardless of what this thing is, I just feel that they're such a cute romantic couple. When you see them, they're almost always coordinated in their outfits. The way, you can see when she's not there, his singing goes off track. Meaning, in the sense that even when he sings, he's always like, he's got a smile on his face and he's singing for her most of the time. And even though they have these little joke, right? It is so cute. It's like such a nice romantic. And then see, they're older, right? They've been married for several years now. You're so mean. No, it's okay. It's fine. Okay, I get what you're saying. But the romance is there, is what I'm saying. So again, romance we're talking about again. Let me put it again clearly, Fadrini. I am saying that I'm not actually disputing that there's no romance. Okay, I'm saying that romance is a word we are using to label something. Right? She's lost. अभी समझ में आपको मीनाक्षी जी, कॉल करो ना. क्या है तुम लोग, सीरियसली ये खामखा मेरे को भटका रहा है टॉपिक से. आज ते अमो थर्सडे था, रोमांटिक थर्सडे था. I really wanted to play like beautiful romantic songs. Okay, fine, okay. Yeah, I'll do again. What is it? I will see. So far, all the songs you're playing, there's a pattern, and I'll come back to them. I'll go play one more song which you consider to be romantic. Yeah. ठीक है? Yeah. ये गाना सुनते हैं, and I'll come back and tell you what exactly I'm talking about also, right? 408-912-2479. Do you think this song is romantic? Yes. तो ये इस गाने के ऊपर गौर कीजिएगा. श्रेया घोषाल की आवाज और सोनू निगम की आवाज में बन फ्रॉम द मूवी आजा नचले. लिरिक्स कौन है फादवानी? I don't know. जयदीप, यार, come on, what is this? ऐसे चले जब हवा, इश्क हुआ ही हुआ. ऐसे चले जब हवा, इश्क हुआ ही हुआ.
शोर हुआ, दिल चोर हुआ, दिल हुआ, ऐसी चले जब हवा, इश्क हुआ ही हुआ। वाह वाह फादर, देखा ऐसी चली जब हवा, इश्क हुआ इश्क हुआ. इट्स अ फीलिंग. अच्छा एक एक मिनट. मिनट. हलचल हुई, हाँ जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी ओर हुआ. वो that's that is love, that is romance. It's like that feeling like फिजिकल फीलिंग. यस आई अंडरस्टैंड. नमस्कार, आप कहानी सुनाते हैं पैम पैम के थे मोहम्मद तस्दीक. Who's this? हेलो. Hi, Pam Pam. मीनाक्षी जी. देखो मीनाक्षी जी ऐसे ही कॉल नहीं करती है, पूरा स्टडी करके आती है. 1.5 आवर्स पढ़ के कहीं पे तो क्या बैठ जाए. रिसर्च मार के कहा क्या क्या पढ़ के आ रही है? नहीं नहीं, गौर जी से लिया होगा थोड़ा पॉइंटर्स. आई एम श्योर मैं गौर सारे जी. बंदूक की बातें सुन के थोड़ा समअप करके फिर आई हूँ. अरे वाह. Still I want to make it clear कि मुझे अभी भी नहीं पता क्या रोमांस है. नहीं नहीं, जो आपके लेकिन साथ उनकी जो बातें सुन के हेलो? और कुछ चीजें हे, हेलो गूगल करके मीनाक्षी जी, क्या जो आप गौर साहब से आपके साथ करते हो रोमांस है ना? पता नहीं. अरे वाह. डिनर बनाते हैं वो आपके वहाँ लिए. में क्या करती है गौर साहब के साथ? तेरे को क्या मतलब है तू उससे? उसके ऊपर गौर मत कर मेरी माँ. तेरी गौर जो होती ना, तेरा विजन जो है ना, विजन एकदम मिशन है, मिशन मंगल तेरा वो. हाँ, तेरा विजन मत तू तू बात कर रहा था उसके I बारे was में. talking about the light things like बर्तन मांजना, पका के रखना, मैगी बनाना, चागी बनाना, all those things, right? शैगी बनाना. मतलब वही यार, वो ड्राइव करके उसको लेके जाने का ग्रोसरी स्टोर, सब all the small things of romance, right? नहीं मीनाक्षी जी, क्या बोलते हैं आप? हाँ. बातों से तो यही लगा आप दोनों की, और प्रणब जी की बातों से तो यही समझ में आया. अच्छा Oh. अच्छा. और क्या रोमांस होता है आपके हिसाब से? नहीं, मुझे बस इतना ही समझ में आया कि इट्स अ काइंड ऑफ जेस्चर जो आप अपने लव्ड वन को दिखाते हो टू कीप योर लव अलाइव. जहाँ पे आपको लगता है पार्क रहना चाहिए ना रिलेशनशिप में, तो वो रोमांस के थ्रू फुलफिल होता है. हाँ हाँ. तो आप बोल रहे हैं कि एक्चुअली फॉर समबडी टू बी इन लव दे हैव टू कीप शोइंग रोमांस. नॉट शोइंग हाँ, रोमांस. वो नॉट शोइंग बट Expression. प्यार और गहरा होता जाएगा. एक मिनट मीनाक्षी जी, एक मिनट. हाँ, क्या बोली तू? Expression. नॉट शोइंग रोमांस एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन ऑफ लव. नॉट शोइंग रोमांस एक्सप्रेशन. फालतू प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट ये शोइंग रोमांस क्या है? शोइंग रोमांस ऐसा कुछ नहीं है. तो एक्सप्रेशन क्या Bad होता है? English. What is oh somebody talking about semantics right टाइनी now. जेस्चर्स जो आप शो करते हो एक्सप्रेस करने के लिए अपने लव हाँ. को, दैट इज रोमांस. हाँ So it's not no, but same thing, Pastor. हाँ. Tiny gestures. Finally, my God. Yeah. You know, sometimes I tell you, मीनाक्षी जी, आपका point of view बहुत अच्छा होता है यार, seriously. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मैंने ये आप सबसे का सुन के अपना बनाया है. अरे यही होता है ना, this is what is learning, right? हाँ. That's why I always तो take the आप क्या extreme. करते हैं रोमांस को अलाइव रखने के लिए मीनाक्षी जी? एक दो चीज बताइए. नहीं पता. मैं इतनी देर से सोच रही हूँ. नहीं पता कि नहीं मुझे बताती? कुछ समझ में नहीं आया. नहीं बताती या नहीं पता? बताओ. नहीं पता सीरियसली. कुछ तो करोगे ना कहीं पे. बहुत देर से सोच रही कॉफी हूँ देने के कि टाइम पे क्या हो सकता है, क्या हो सुनो, सकता है, और नहीं सुनो. समझ में आया. Probably कॉफी देने के टाइम पे वो आंख मारना, नो, all those things. Probably. या आप गाने के टाइम पे आपके बाजू आके बैठना, या आप जाके उनके बाजू बैठ के ऐसे टच करना, वो होता नहीं क्या रोमांस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. और क्या बात है यार. आपको गवाया था उन्होंने ना उनके माता जी के सामने, नहीं दादी माँ के सामने, दादी माँ के सामने. वो भी काउच के ऊपर, लव सीट के ऊपर. हाँ. हाय हाय, ये रोमांटिक है. देखा हाँ. नाउ समझो फादर, दिस इज रोमांस फिजिकल. अरे आप रोमांटिक जेस्चर्स करती हैं क्योंकि हमने आपका देखा कि वो क्या देखा आपने? क्या देखा आपने? क्या है? फोटो. ऐसे मत बोल यार. फोटो देखा यार तूने? बवाल मच जाएगा यहाँ पे यार. तुम भी सही में क्या क्या बोल रही है तू? फोटोज फेसबुक पे मैंने पोस्ट देखा. हाँ, क्या देखा? उनके 10 ईयर एनिवर्सरी का कितने स्वीट मैसेज लिखा था और कितने स्वीट फोटोज पोस्ट किए थे आपने. सो ऑफ कोर्स दैट इज रोमांटिक, राइट? अच्छा. दैट जेस्चर इज रोमांटिक टू डू दैट, राइट? Yeah. very Yeah, good. so- So you're saying that it is something a physical gesture somebody does. That is romance. What physical gesture? Something physical that you got to do some action, You right? don't have to do something physical. Buy a Arthur. ring, whatever it is. Wait. Huh. It could just be this. There'll be something, right? Sometimes with your loved one, there's that, you know, there's something that that person does that makes your heart go oof. Oh my God, really, Fadlani? Like, you know, it's like oof. Like you just got that Huh? I know the song. Oof. Teri yada. I wanna be with you. Yes. Oof. That is what I'm talking about, Fadlani. I want to be with you. It is that
attraction. तेरे दिमाग में और कुछ नहीं सूझता है, Plato तेरा himself- मेट्रो रेलवे माइंड है, वन ट्रैक एंड डर्टी फेलो। सीरियसली अब क्या? वो ना अट्रैक्शन वाली फेज पर हैं, तो वो उसी वाली फेज की बात कर रहे ओए, हैं। नहीं। हम लोग अभी 3rd 4th फेज पे आ चुके हैं। Correct. So wait, I'll tell you what. No, no, no. Marriage वाली phase I'll पे tell you. हैं, I'll tell you what. हम उस हिसाब से बात करेंगे। So you see, I'm not. My understanding of romance is philosophical. In philosophy, Plato, you mante ho na? Plato is the guy who actually talks about, right? He and his 6 friends actually talked about a story where they actually talk about how, what exactly. You know, Eros bolte na, jo hamara Eros, not the movie maker. Eros is the god of love, Yeah. right? They say the creation of love and what romance actually is the inner attraction between the two to unite. Because they say the whole thing is the fact that Eros was a being which had both male and female in it, and because got separated, coming together is that feeling of jo tu boli na, kya boli tu? That you said some word. Exhilaration. Exhilaration, to come together. Uh-huh. That's what it is. Yeah. Is that attraction, which is physical attraction, binding them together. It ties in very beautiful what Srinidhi said also. In fact, everybody calling today, you're right in every which way. In your own way, you're right. Because that's what it is about. You feel the oneness with the thing, right? That's what the wants to do. So, the wanting to come together is romance, is what philosophy says. I don't know about. मैं नहीं बोल रहा. मैं नहीं बोलता भाई. तो मैं नहीं बोलता. wanting to come together, उसके लिए भी एक मूवमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो हाँ. तो रोमांस है। Yes, मैं वही बोल रहा हूँ ना, feeling that is that physical. Exactly. मैं बोल रहा हूँ, चिल्ला के बोल रहा हूँ, ये मानती नहीं मेरी बात. It's something of, it's a physical attraction, फालतू नहीं. नहीं आलतू बाबा। Oh my God, now she'll say no. Okay, It cannot be a physical attraction. हाँ, exactly. It is not a physical attraction. वैसे देखो तो हर सुपर मॉडल को देख के हर आदमी का दिल फिसल जाएगा, हर ऋतिक रोशन को देख के हर लड़की का दिल फिसल जाएगा. That's not physical. It's not physical. It's something else. It's metaphysical. Yeah, whatever. Metaphysical. ये शब्द डाल दिया metaphysical. चलो. Yeah, तुरंत you're not changed at all, फालतू नहीं. मैं बचपन में ऐसे ही करती थी, डिबेट में बड़ा शब्द डालती थी आपके. मुझे understand what it is. मुझे याद है एक्सटेम्पो तरह. हाँ, very good. लेकिन थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, आपने एकदम इस टॉपिक पे पूरा क्लैरिटी पानी फेर दिया. वेरी गुड. इस टॉपिक पे कोई क्लैरिटी है ही नहीं। Thank you very much. My point Don't exactly. blame me for that. My point exactly. Romantic is a romantic notion. It's actually a unrealistic thing. क्या बोला आपने? या सबके लिए अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं, तो हाँ. जो जिसकी डेफिनेशन सूट करती है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है। वेरी गुड. तो आप ये बताइए, आप अपना जो रोमांटिक, अगर आपको रोमांस करना है, मतलब एक्सप्रेस करना है गौर साहब को, रोमांटिक गाना गाने के साथ कौन सा गाना आप चूज करेंगे? सरकालियो खटिया नो, हाय हाय। अब आप आगे फिर नहीं, वो दीपा करेगा. आप आलतू बाबा का पॉइंट प्रूव कर रही हो, आप आलतू रानी। Finally, वो भी romantic है यार. finally she'll come back to my point only because she sees the whole. ये मेरी शागिर्द है यार, वो मानती नहीं है. मेरी एकलव्य है मेरी ये. यार मैं एकलव्य फालतू नहीं. कलयुग में ऐसे हो गया कि मैं द्रोणाचार्य हो गया, तू एकलव्य हो गई. तू खुश है आलतू बाबा? मैं ऑलवेज खुश रहता हूँ. हाँ, तू पता नहीं कहाँ से ऐसे उठपटांग चीजें सोच के आता अरे है. कलयुग में सब उल्टा होता है फालतू नहीं. वो द्वापर युग में मैं तेरे को क्या किया था. एक मिनट, मीनाक्षी जी को बोलने दो. हाँ बीना जी, सॉरी बताइए आप क्या गाना यूज मेरे करें? लिए रोमांटिक गाना शोले वाला ना? मुझे वो अच्छा लगता है ऐसे में रोमांस के लिए. हाँ कौन सा वाला? बड़े ओए होए होए. अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। थैंक यू वेरी मच. क्या हुआ? क्या अच्छा गौर साहब के लिए खाता क्यों? हाँ, खुश हो जाओ आलतू बाबा, आप खुश हो जाओ। मैं हूँ क्या? मैं तो आप भी रोमांस एक्सप्रेस कर रहे हो. ये हर एक चीज में अल्प है. अल्प तृप्ति, अल्प बुद्धि, अल्प सब कुछ, अल्प ज्ञान. मैं तो हूँ ही अल्पजीवी, क्या करूँ? मैं तो ही शाश्वत थोड़ी हूँ. हाँ हाँ, हाय हाय हाय. हम तो बस आते हैं जाते हैं. हो सके तो गीत गाचल में थोड़ा बहुत गाते हैं. और बंधुओं को लुभाते हैं. यस और सभी के दिल को भाते हैं. यस, लेकिन समझ में कभी नहीं आते हैं. थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी कॉलिंग अस. हैव अ वंडरफुल इवनिंग. और बहुत सारा दिमाग खाते हैं. एंड यस, आपका भी हम लोग गाना लगाएंगे फॉर श्योर. ओके, थैंक यू सो मच. हैव अ ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इवनिंग. एंड आपको बच्चे बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहे हैं हमें. वेरी गुड, अंडरस्टैंडेबल. सो आई एम गोइंग टू बी टोटली क्लूलेस एनीवेज आफ्टर दिस पर्टिकुलर शो. प्लस गोड़ा बंधु वेटिंग में. नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है पैम पैम के थर्सडे में. हुज दिस? हेलो पम 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 पम. अरे वाह, ये आ गई हमारी देवी जी.
फाल्गुनी जी के पास तो अरे ज्ञान। आपने जो कब से फोन कर रही हूँ और कब से आपका शो सुन रही हूँ, और फिर हमें नहीं रहा गया जब हमारा कुछ जिक्र हुआ आपके शो में। मैंने नहीं था। अरे नॉट मी, फाल्गुनी जी साहब, फाल्गुनी ने किया था। मेरे हिसाब से सबसे रोमांटिक कपल, one of the most romantic couples I have met is both of you. Yes. Yeah, seriously, फाल्गुनी जी। Yes. आपको देख के ऐसा लगता है कि थैंक यू। आई नो, आई थिंक आप हमें ही मेंशन कर रहे थे, मैंने सोचा आपको फोन करना ही पड़ेगा। 10 मिनट से फोन पकड़ के रखा है। अच्छा, ओनली बिकॉज़ यू मेंशन आप पकड़ के रखे हो। हाँ, वाह, देख लिया आपने। हाँ। तो अभी बताओ, क्या मैं सही थी? आप सही थे। आपने जो बोला था ना कि इज नॉट अ फिजिकल अट्रैक्शन। आफ्टर लॉन्ग टाइम इफ यू आर कपल देयर इज नो फिजिकल अट्रैक्शन। रोमांस में खाली फिजिकल अट्रैक्शन जरूरी नहीं है। आप सही है कवि। हमारी तो सांसों में तो सांस में रोमांस भरा हुआ है। आपके सांस में क्या बोला? हर सांस में रोमांस है। हाँ, नहीं भाई, वही सबको बोलता हूँ। सांस बोले तो मदर इन लॉ नहीं, सांस ब्रेथ, हर सांस में। हेलो, एक्सक्यूज मी, हर सांस में हो सकती है यार, व्हाई नॉट? हाँ, ये तो आज के जमाने में पीपल मिसअंडरस्टैंड मदर इन लॉस। व्हाट? मदर इन लॉ के बारे में बात कहीं करते हैं, अभी रोमांस के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने लिया मदर इन का नाम, मदर इन लॉ। सांस, उन्होंने बोला रग वही मेरा और दीपक का भी वो व्यू एकदम अलग है। बट मैं फालतू रानी के साथ सहमत हूँ। हाँ, वेरी गुड। नहीं, आप अरे फाल्गुनी जी, आपके बारे में आपके बारे कुछ बोल नहीं सकता। तो आपके हिसाब से फाल्गुनी जी, क्या रोमांस होना चाहिए लाइफ में टू हैव अ हैप्पी? कर लो बात। हाँ, होना चाहिए ना। होना चाहिए। रोमांस के बिना तो जिंदगी नहीं है। मैंने रोमांस किसी भी तरह से, लाइक फॉर मी, रोमांस दिखाने के लिए मैं अगर खाली अच्छा खाना बनाऊं तो भी रोमांस दिखता है। तो आप जैसे कि हमारे लिमिटेड नॉलेज के इसमें आप वन ऑफ द SME हैं यहाँ पे, मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो आप रोमांस कैसे करते हो? आई डोंट नो, हमें तो याद भी नहीं अब तो रोमांस कब करते हैं। ओह, तो कभी एक दूसरों की केयर करो, एक दूसरों की बिना बोले एक दूसरों की जो ख्वाहिश है वो पूरी करो, एक दूसरे की सभी फीलिंग समझो, अच्छा बुरा, अच्छा मूड समझो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझो, उसी को मैं तो रोमांस समझती हूँ। वंडरफुल। एंड अभी दीपक जी बाजू में है, तो उनसे भी थोड़ा हम बात कर लें। हाँ। एक खड़े यही है वो। अरे दीपक जी, वाह, आप भी बाजू में खड़े थे। वाह। तो मैं तो उनकी आपको मालूम तो है, मैं हर वक्त, हर दम, हर बार उनकी बाजू में ही रहता हूँ। मैं तो हर एक पल मेरा रोमांस में गुजरता है। जब वो खाना परोसती है तभी मैं भी आशिक हो जाता हूँ। जब भी वो प्यार से दिखती है तो भी मैं आशिक हो जाता हूँ। जब भी मैं ड्राइव करता हूँ तो पास में बैठती है तभी भी मैं अच्छा सर, एक मिनट, आप अभी आपने जो बोला मानता हूँ, बिकॉज आप पैदाशी आशिक है, वो अलग बात है। लेकिन द पॉइंट आई एम आस्किंग यू, आप कैसे रोमांस करते हो? आप हाँ, तो आप मैं ऐसे बोल देता हूँ। मुझे मालूम है फाल्गुनी जी क्यों ऐसे बोल रही है। दीपक जी, आप ये बताओ कि आप उनको कैसे एक्सप्रेस करते हो रोमांटिकली? व्हाट आर देयर एनी एक्शंस यू डू व्हिच इज लाइक योर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रोमांस? हाँ, जब हम साथ में गाना गाते हैं रोमांटिक, तो बस वो जीजीसी में गाना गाते हैं, फिर बस हम एक दूसरे की आंख में खो के, फिर हमें मालूम नहीं रहता है वर्ड्स भी, हमें मालूम नहीं रहता कहीं से वर्ड्स आए, कहीं से म्यूजिक आए, बस हम एक दूसरे में खो जाते हैं। नहीं, मैं बताती हूँ, और गाना हिट हो जाता है। नहीं, मैं बताती हूँ। जीजीसी ने चांस दिया हमें। दीपक जी, मैं बताती हूँ, आप जो रोमांटिक, जैसे मेरे हिसाब से, मुझे क्यों लगा आप इतने रोमांटिक हो, आप हर सुबह उनके लिए चाय का पहला प्याला आप बनाते हो। यस, एवरी सिंगल मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट उन्होंने ऐड किया, ब्रेकफास्ट भी मैं बनाता हूँ। फिर उनको मैं गाड़ी की उनको साथ लेके गाड़ी में उनको छोड़ने जाता हूँ। 2 बजे लेने जाता हूँ।
हर वक्त मेरा उनके साथ ही गुजरता है। जब वो खाना पकाती है तो मैं सामने बैठ के कुछ मेरा काम करता हूँ और उनके सामने अगर कभी आपका झगड़ा हुआ हो तो आप गुस्से में हो तो फिर भी करते हो? नहीं, मैं तुरंत सुलह कर लेता हूँ। मुझे ये पे झगड़ा तो होता ही है, हर एक इंसान में तो होना ही चाहिए थोड़ा थोड़ा तो, पर होता है फिर भी मैं मेरी मूछ है वो नीची कर लेता हूँ तुरंत। यू आर राइट, यू आर राइट ऐसा बोल। वेरी गुड, सो स्वीट, सो स्वीट। सही बात है। एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच, आप लोगों ने एक्चुअली कॉल करके आज का शो में 4 चांद लगा दिया आपने। 4 नहीं 2 चांद लगा, तो 2 हम ऐड कर देंगे बाद में। बट थैंक यू सो मच सर, दीपक जी और फाल्गुन जी, वी ऑलवेज लव यू, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आप दोनों का एक रोमांटिक गाना बताओ जो आप विल टेक सेपरेट गाना, नो? हां, विल टेक सेपरेट। आपके हिसाब से कौन सा बहुत ही रोमांटिक गाना है? अच्छा, मैं बताता हूँ। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तुझे कहते हुए जी डरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। सर ये मानूंगा नहीं मैं, ये नहीं मानूंगा। क्यों? आप तो यू वांट टेल हर दैट यू आर इन लव विद हर, राइट? वाह, सही है। अच्छा, अभी फाल्गुन जी आप बताइए, आपके हिसाब से कोई रोमांटिक गाना जो आप इनके लिए गाओगे? ना वो तो आई डोंट रोमांटिक गाने तो बहुत ही है, मगर अभी तो कुछ सोचा नहीं। अरे सोचो, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। सुबह तले आँख खुलती है तो चाय मिलती है, तो वही ये उठे सुबह तले, ये झुके शाम झुके। आई थिंक वो गाना रोमांटिक है। I will definitely play the song for you, and it's a very nice song, and I really think that you live that song. Yeah. हाँ, एक गरम चाय का प्याला हो, उसको बनाने वाला हो। Thank you so much for calling us, दीपक जी, फाल्गुन जी, सुनते रहेगा आप लोगों के लिए वो गाना डेफिनेटली लगाऊंगा, ठीक है? Thank you so much for calling in. And of course, we're almost coming to close of the show right now. Oh my God, we learned about what? Nothing actually. Romance. Hey, from the beginning, I've been telling you, Falguni, it's an action. It's not just an action, It's a physical action, Falguni. Everybody's talking about the same thing. It's what a feeling. वो गाना सुना है आयरीन कारा का? From Flashdance. That's what it is. That's romance. Yes, feeling is a physical feeling. अबे जब वेस्ट है यार, अंदर से वो पुलकित होता है मन। Pulkit is what feeling of. I don't know. Anyway, never mind. Pulkit also is a feeling. Okay, fine, whatever. Okay, and Banujan, this is a nice song which our Meenakshi ji asked about this. Again, so देखो, आज तियामो थर्सडे, माफ कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत वलत बोल दिया, आपके सोच के विरुद्ध बोल दिया तो माफ कर दीजिएगा। ये अभी बच्ची है। हाँ? मैंने क्या किया? मतलब माफ कर दे बोला मैंने तुमको। हाँ? And this is a nice song. मुझे क्या माफ करेंगे? तो गलती तो सबसे होती है, फालतू नहीं, छोड़ दो यार। गलती तेरे से हो रही है, मेरे से नहीं। मैंने बोला रोमांस। गाना तो मैं लगा रहा हूँ ना। अच्छा। बड़े अच्छे लगते हैं बड़े अच्छे लगते हैं क्या? ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। यस बलजान, हमारा भी एक रोमांस है आप लोगों के साथ, मानोगे या ना मानोगे, हम लोग ऑलवेज आते हैं ऑन एयर, क्योंकि हमारी तरफ से ये रोमांस है आपके लिए बलजान। रोमांसिंग और बंदूक इज व्हाट वी डू ऑन एयर। इसमें कोई गलत बात नहीं है भाई, सुनो। और तुम वेल बलजान, इसमें कोई ज्ञान दान या बांटने का जरूरी नहीं है। आई होप यू एंजॉय टुडे शो as much as we enjoyed presenting it to you guys. हाँ पता नहीं, I think I'll end this today's show with this beautiful song. Madan Mohan composition है. Movie called Chirag. Okay. So in other words, romance this is right. Romance is like you actually leave everything else around the world, only focus on the person. Yeah. And again, comes down to the point of submission. वैसा कुछ नहीं है। इसी के साथ जब लोग बोलने वाले आप लोग गुड नाइट, शब्बा खैर, कीप रोमांसिंग।
That's right, बंदूजान. Keep the romance alive, keep the love alive. एक चीज मैं बता देती हूँ आपको बंदूजान कि इस लॉकडाउन में ना रोमांस करो. रोमांस के बहुत सारे मौके मिलेंगे. हाँ. लेकिन at the same time, this is an opportunity where many of us tend to take people, not opportunity, this is the time when we tend to start taking people for granted, and familiarity breeds contempt बोलते हैं, but let's not let that happen. जितना हो सके appreciate कीजिएगा, love your loved one, show them that you love them. Yeah, and you know what, Father, I was talking about why physical, you know why I said that? Oh, it's a feeling, right? You actually can generate the feeling. Yeah. If you say, oh, there's no romance in life, yeah, you can actually create it also. How? That's what I said, behaviors. Yeah. Recognizing them, acknowledging them, those are simple things. And if you notice, everybody you called in today, उन लोगों का कुछ ना कुछ behavior था which actually incited the romance in them. Yes. So that's why I was emphasizing the fact that romance actually is a feeling which can be, it's a physical feeling which can be brought on by your psychological thinking. Yeah. That's what it's all about. And giving gratitude, appreciating them in your life. Exactly. Songs देखो एक के ऊपर एक गाने वही बोल रहे हैं. हाँ. They're appreciating the person's presence in their life. That's what you got to. Small things which will automatically spark the romance in your life, brother Jan. Try it and then you come and tell us about it. Don't knock it, you try it for sure. Absolutely. And say I love you, te amo, whatever. Whatever you want to say. Yeah. Express your love. That's Yes. it at the end of the day. Love you all, brother Jan. Love you all, Badajan. We shall be back tomorrow with Good Morning Bay. तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए. Good night. शब्बा खैर and a प्यार भरा. Mwah! इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है. इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है. ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले. तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है. Hi, this is Anushka Sharma. You're listening to me on Radio Day Hotties with Altu Baba and Faltu Rani, where entertainment keeps getting hotter. मिल गाओ मिलजुल गाओ मंगल बेलाई रे, अंगना में गूंजे तो तले बोली सब मिल गाओ बधाई रे. मिल गाओ मिलजुल गाओ मंगल बेलाई रे, अंगना में गूंजे तो तले बोली सब मिल गाओ बधाई रे. टकटकी निहारूं रे, टकी निहारूं रे, बाट तकों तेरी रास्ता सवारूं रे, राह देखो तेरी. रिश्ता है मुझसे सच्चा तेरा, फिर भी क्यों डर जाए मन ये मेरा. नैन बिछे राह सजी, अब आजा द्वारे तू, अब ना कर देरी, आजा रे.